opportunities. So when it comes to oral, it really goes non-verbal. That's why the question on Slido, do you know what is non-verbal? And do you think non-verbal is very important? So all thanks to you, all of you who rated it high. Yes, non-verbal, जहां भी कोई impact नहीं आएगा आपका. बात तो होगी तभी भी, impact नहीं आता है. Why some teachers cannot make an impact in the class? आप उनको याद भी नहीं रखते हैं graduation के बाद. भाई obviously till graduation आपको उनकी value है, number आपके उनके हाथ में, internal and all that. But the teacher can make an impact when he or she tells in such a way that you are able to understand and accept. So that is in 40 times we get a chance. है ना, 40 बार हम मिलते हैं आपसे एक subject में. So see the power which we have in those 40 class. I am feeling a little weak today because I have only one class, and that also you can understand the limitation of time. So इसको सब पढ़ें, इसमें से जो जिस सितारे लगाएं उस पर खास ध्यान दें, ट्राई करें, लिसन पहले क्वेश्चन. जिसमें आप पढ़ रहे थे आपको आपका क्वेश्चन कुछ और था, आंसर कुछ और दे रहे थे आप लिखने में भी. लिसन, रीड केयरफुली, say small sentences but clearly. छोटे छोटे सेंटेंस बनाएं इनिशियली. डोंट टेक वेरी हाई फाई. फुल स्टॉप जल्दी लगाएं. दे आर सिंपल सेंटेंसेस. जहां पर एंड जुड़ता है वो होता है कंपाउंड, और जहां पे सेमी कोलन और 2-3 फ्रेजेस आ जाते हैं, दैट इज ए कॉम्प्लेक्स स्टेटमेंट. सो डोंट स्टार्ट विद कॉम्प्लेक्स स्टेटमेंट इन इंग्लिश. स्टार्ट विद सिंपल सेंटेंसेस. थोड़ा थोड़ा कॉन्फिडेंस बढ़ेगा बढ़ेगा बढ़ेगा. कुछ गलतियां होंगी, सो व्हाट. 2 प्लस आएगा, एक माइनस भी आएगा, तो व्हाट विल बी द नेट? +1. 2 plus and -1 will give +1. That mathematics you do in communication. If you only no problem. By more practice, Chetan Bhagat, what should I say about him? जहां पर डाउट होता है ना ये यूपी और बिहार वाले एक्सेंट के लिए, so just read about Chetan Bhagat. Listen to his YouTube videos if that is the case. In fact, I wrote to him and I'm glad he responded back. What beautiful points he picks on Indian youth, especially boys. He बंदे बंदे पे ज्यादा बोलता है. He himself says बंदियों के लिए मैं कम बोल रहा हूँ. So he sees distracted बंदे ज्यादा. And he himself is coming from a place where it is primarily Bihari tone, and you see his English today. So what more example should I give you? Confidence बहुत बड़ी चीज है बेटा. How will you get confidence? Have एक थोड़ा सा ability magic करना है. There are many of you who are not good in driving. You would have met your seniors. उनको लगा confidence कम है, छोड़ देते हैं. तो छोड़ना मत communication. Driving के पास Ola है, Uber है ना? Ola, Uber. Today in our city, Bangalore, we have Rapido also. But what about communication? आप थोड़ी किसी को और को बुलाएंगे अपने बारे में करने के लिए. Okay, you can outsource driving, but communication you cannot outsource. आपको ही करना है. फिर क्या होगा? आप टेक्निकल आते जाएंगे, बट आपको मैनेजरियल रोल नहीं मिल पाएंगे अगर आप पूरा कम्युनिकेशन. सो यू विल नॉट ग्रो मच इफ यू वांट टू ग्रो. तो इट्स अ ग्रेट टूल. इवन इफ यू डोंट वांट टू ग्रो, इट्स अ ग्रेट टूल आपके घर में, सोसाइटी में, शॉपिंग में, ऑनलाइन शॉपिंग में, सर्टेनली इन ऑफिस. सो आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग. I hope. So when it comes to like a small child, when we learn, we best होता है पहले मुझे क्या बोलना है उसको तैयारी करें. सडन मत बोलना शुरू करें. तो अपने आप को टाइम दें और फटाफट उसको इंग्लिश में कन्वर्ट करें. Obviously start in Hindi, start in your मातृभाषा, गौरवान्वित फील करके. But if you have to answer in English, don't start from Hindi to English here. आपको, I hope you're looking at me in the camera. Think in Hindi, convert here, translate in English, then speak. Most of us fail because Hindi to English. So this I do in Kannada. When I speak Kannada, I'm not confident. So I speak in Hindi, convert in Kannada, आधी Kannada, and then remaining Kannada I speak from here. तो वो थोड़ा सा इधर-उधर हो जाता है. So that is something. So make mental notes. बहुत important है क्या बोलना है. फिर practice कर ले मिरर या phone में.
उसके बाद ग्रुप में लेकर आए, ग्रुप पहले दो दोस्त अच्छे मिल जाए। क्यों बोलते हैं 1 और 1 11 होता है, क्यों बोलते हैं? लाइव एग्जांपल देखिए कम्युनिकेशन। You don't want big class to help you. You want only one friend to make it 11. Do that. Do that. Or listening is important oral में. It's a beautiful cartoon which a small girl comes to her dad who is busy in his laptop. Papa, I made something. The dad says, हाँ बेटा बोलो मैं सुन रहा हूँ. The बेटी is not showing, कुछ बोल नहीं रही है, वो दिखा रही है. But पापा तो busy है लैपटॉप पे, तो उन्होंने बोला हाँ बेटा मैं बोलते जाओ मैं सुन रहा हूँ. So don't think only we fail in office, we also fail in home. And even I have failed sometimes. I'm thinking something and my daughter is saying something and I heard only 1 or 2 words and I assumed what she told. And because I have told her, she's empowered to catch me and told, Mommy, you are not listening. Then I become, oh yeah, sorry, beta, sorry. So let's accept when we are not doing. And then let's repeat less. So this is another good way to learn. फिर अब ये सोचूं मैं, अरे मैं तो see my face. That is problem. So very important is this slide. You may not get in Google. This is my slide and with pride I present it to you. Prepare. 4 P हैं. 4 P हैं. किसके लिए? अपनी ओरल भाषा को अच्छा करने के लिए. Prepare. Practice. Prepare क्या? पहले think. Prepare ये copy from Google. That is not preparation. That is copying. मुझे बोलना है यूक्रेन वॉर पे विकिपीडिया पे आ जाओ. सॉरी, ये नहीं बोल रही. जितना भी आपको आता है 4 सेंटेंसेस. थिंक मुझे क्या बोलना है. प्रैक्टिस करें बोलने की. मेंटल नोट्स बनाएं, प्रैक्टिस करें और हैव पेशेंस. कुछ होगी गड़बड़, एक आध प्रोनाउंसिएशन जाएगा, जाने दीजिए. स्टेशन, सी द वर्ड इज स्टेशन. पंजाबीज विल से स्टेशन. इन कन्नड़ा वी से टेशन. ऐसी हटा देते हैं हम यहाँ पे टेशन. ओके, हिंदी वाले क्या बोलते हैं? स्टेशन. इस तो है ही नहीं. स्पेशल, द वर्ड इज स्पेशल. अब देखिए, सो व्हाट टू डू? नो प्रॉब्लम. वो थोड़ी लिखित है, वो तो लिखेंगे आप स्पेशल. मौखिक आ रहा है स्पेशल. बोल रहे हैं ना, इसी यू टू से मैं बोल रहा हूँ ना, बोल रहे हैं ना, क्या सुन नहीं रहे हैं आप? समथिंग लाइक दैट. सो प्रैक्टिस, हैव पेशेंस. तो दैट्स व्हाई रिकॉर्डिंग हेल्प्स यू अ लॉट. ये क्यों बोल रहे हैं? इसलिए रिकॉर्डिंग करें कि पता चल जाएगा आपको क्या है. सो हैव पेशेंस ऑन दैट. इट विल नॉट कम बाय इट्स ओन. थोड़ा थोड़ा आएगा. ये बहुत इंपॉर्टेंट है. और उसके बाद कितना भी फेल हो, हैव पॉजिटिव एटीट्यूड कि मुझे करना है, मैं कर लूंगा. इसके लिए फीडबैक लें. कोई कुछ बोलेगा अच्छा हुआ, इतना नहीं. फर्स्ट टाइम 3/10 मिलेगा, दोबारा बोलेंगे 3.5 4 मिलेगा. तो ये डोंट लुक फॉर पासिंग मार्क्स हियर, लुक फॉर बेटर मार्क्स. एक टाइम आएगा विद इन अ मंथ यू विल गेट 6/10 ऑल्सो. अब किसी के लिए 6/10 कम है, पर आप कहाँ से शुरू किए? 3/10 से. तो आपके लिए तो डबल है ना. Be happy. I hope I'm making some sense to you. So use phone recording. Good friends, not friends. Good friends. अगर आपके friends time waste कर रहे हैं, आपका गलत आदत डाल रहे हैं, तो please उनको friend ना बोले, सिर्फ साथी बोले. Friend बड़ा अच्छा word है, ये थोड़ा pollute हो रहा है. So इसके लिए अगर आपको जहां आप हैं, जो बात 4P की बोली, all of us are in different level. So build the skill by knowing yourself. आपको क्या चाहिए? vocabulary, tonacity, क्या सब कुछ. तो you should see yourself. So know yourself. Quickly वापस आए स्लाइडो पे. What we were doing. Come back to Slido. And the question which I am asking you now is, जरा इस क्वेश्चन को देखिए. One question I'm going to ask, and this is important. I spoke about the feedback, right? Communication has very important aspect is feedback. So now you give the feedback. How's the session going on for you? कितना समझ आ रहा है, क्या हो रहा है? Show your written communication skill the way you want. Come back to Slido. And those of you who have now come, I can again put back the link. Or otherwise you can share, but put it back and do come on the Slido. And write it frankly how it is going. So it is damn productive. Damn is a good word, but a little informal, negative usage. है ना? So okay, if it is productive, wow, I am very happy. Great, comma, great के बाद full stop आएगा. It's damn productive. है ना? Great, it's damn productive नहीं. This is I'm just telling you. अभी तक मैं feedback दे रही हूँ आपको भी. So take it positively. Okay, okay. Any suggestions? Because अभी भी हमारे पास करीब 24 मिनट है. I can take it maybe 5 minutes extra. If at all I'm unable to do more. Yeah.
So I'm glad you asked the questions in the beginning. अभी भी questions है, questions भी डालते जाएं. Are you seeing this? Give us a Q&A also. You can put questions here also. कभी-कभी हम पूछ नहीं पाते हैं. Still you can ask by writing. And now all of you are participating hopefully. So still many of you are not there. Your choice, no problem. Okay, if it is helpful, wow, that's what I want. I'm trying my best. This is my first session. And normally, when we get with big numbers, we have some 20, 30 students already in class before we enter. Today it was NPTL, Gyan, and I. 3 of us were there when we began the session. Yes, ma'am. Thank you. Really, Gyan, very good. You have value of time. I'm really thankful to you. And you helped me for asking on WhatsApp also. When I told you this task, call your friends on WhatsApp. See, this is the thing. You have to solve the problem. Your friends are late. Immediately you texted, some of them joined. Okay. Yes, you're learning new mirror points. Wow, so beautiful one of you have written. Thank you. So, beta, this is not was. I am still doing the session. You have interim feedback. The question is, how is? Oh, thank you. See, ek emoji aaya, dekhiye. This is also the power of non-verbal in written communication. I'm glad you are extremely happy. Yeah, that's what we try. We are trying our best. Questions aa chuke hain. I will quickly go. Very nice, Abhinav. Damn means we say na, it's very. You can use very, very productive. Damn productive. Hey, damn good. तो अभी हमारी vocabulary में आ चुका है वो word. Interview में बिल्कुल avoid करना बेटा use करने के लिए. So replace it by very. Adverb VERY. Okay. Is it okay to use emoji when talking to someone through chatting? Very good question, Anonymous. Yes. The thing is that don't use emojis with the formal. Suppose you're writing to your principal whom you don't meet always. But there are students who work for the college events, so they are very free. So you can write. Like if you're meeting me first time, don't write. Smile is okay, but don't send other emojis. So preferably use emojis when you know the person. Okay, I have one of my colleague who is working for Government of India. She meets Prime Minister, so she can to his PMO she can write to emojis. But 99.99 people will not use emojis for PMO. So depends kam kahan par hai. Depends. So the takeaways for building confidence is a question mark. Are you asking me or telling me? The feedback is from you. Some of you have written. Still only 11 answers. So I don't know बाकी हमारे students क्या कर रहे हैं. Danish also left. Okay. Sometimes, when you attend by phone, this is also avoid. Such classes should not be by phone. If you have laptop, come by learning for laptop. एक कोई कॉल आएगी आपकी कॉल ऑटोमेटिकली बाहर हो जाएंगे आप. तो अब तो आप फाइनल इन इंजीनियरिंग में है. You know communication more than us, है ना? Electronic communication. So this is it. So question mark की बात मुझे नहीं समझ में आया. What you want to ask, please ask again. एक और question आया है. Is leadership a soft skill? Absolutely, Avindra. Yeah, absolutely. We discussed in the beginning. Soft skill बहुत variety है. At least 10 to 12. One of them is leadership. One of them is effective communication. दोनों अलग-अलग है. If you want to have good leadership skill, you must have communication. There are many bosses who fail to communicate and they lose power also. फिर उनका कुर्सी काम करवाती है, not वो. We don't respect them. उनके पीछे हम गंदा बोलते हैं, सामने good morning बोल देते हैं, नमस्ते बोलते हैं, नमस्कार, प्रणाम भी बोलते हैं. So that's different. वो power के लिए बोलते हैं, not person के लिए. So leadership is a beautiful soft skill. Very, very rare. My teacher says leadership is a rare commodity. The takeaways for building confidence is by practice, by understanding what is the need, by following some norms, by practicing and having patience, you will get confidence. But अगर आपको Swiggy, Zomato, Zepto, yeah, what is that? Today one more na 10-minute app I'm forgetting. One more app is there, Blinkit. Yeah, वो चाहिए अगर तो sorry, communication is not Blinkit. Communication is not Zepto. So kindly don't do. How do I judge a video of my by camera or mirror? What is this question? क्या लिखना चाह रहे हैं? How do I judge yourself? You can do both. Mirror में आप record नहीं कर सकते, कैमरे में आप record कर लीजिए. So mirror was earlier. Very smart people first कैमरे में आके फिर mirror में आ जाते हैं. You can do that. कैमरा आपको ऑप्शन देगा रिकॉर्ड करने का. खुद को देखें. उसके लिए ना टी-शर्ट घर के कपड़ों में नहीं, कुछ फॉर्मल कपड़ों में आए. You know your dressing makes a lot of impact. You will have one session here also on that. क्या पहन के आ रहे हैं आप? तो अच्छे से बैठे, अपने आप को बोले, hey, Abhinav, I'm going to do very nicely, for example. So you try to speak like that. तो आप देखना अच्छा करेंगे.
अकेले बैठ के सुबह सुबह ये जब डिस्टर्बेंस कम हो बाहर रिकॉर्ड करें. So I think I have answered all the question. How to do self-judgment. Self-judgment is done once you are coming to a level of knowing about the skill. Otherwise, you take help of some others. That's why I told good friends, good teachers. So sometimes we are very harsh with ourselves when we judge. We are saying, hey, तू कुछ नहीं कर सकता. अपने friend को बोलते हैं, but we do not help ourselves. So don't judge too much. अपना को बोला चांस ले, करते रहे, पर निरंतर प्रयास करें. इसका ये मतलब नहीं हफ्ते में एक बार किया, अरे वो मैडम ने तो बोल दिया था, ऐसे बोलने वाली बात थी, सॉरी, unnecessarily will make me wrong. निरंतर is routine, practice it. Okay, I think that's it. This question, one of you more asked, Abhinav also asked. Achha, 2 times you have asked question. Okay, ठीक है. So good you asked the questions. I'm glad you asked. And okay, fine. Only 11 answers here. कुछ और questions आए हैं chat में? कुछ नहीं है. Okay. So Anshu also left the meeting. What is the reason, Neeta, your students are leaving? If I am not good, let me know. How should I be better? मैं improve करूँगी. I am a teacher. I don't want power of mind position to make you sit. I am a teacher. I want you to learn. Otherwise, tell ma'am, ये अच्छा नहीं हो रहा है class, कुछ better, हमें bore हो रहा है. तो आप बोलें, I mean, I'm feeling bored. You have full right to say. But एक भी feedback में ये नहीं आया कि ma'am be better. मैं ये समझने की कोशिश कर रही हूँ, where should I do? So let me know how to improve. Otherwise, आपका कुछ पर्सनल काम है तो I can't help it. Yes, I already answered. कुछ और क्वेश्चन है क्या? एक मिनट. How to improve vocabulary? Very good, Abhinav. Vocabulary comes from reading, listening, watching good videos, and newspaper will help you a lot for vocabulary. Right now, also, I have a question before we end. What are the new words you learned? So I do sessions a lot for the students who are going abroad also. Because you cannot work with only Hindi or Gujarati when you go abroad. So every day my children will note the new words and they submit to me by WhatsApp. There are so many ways to learn, I tell you today, all thanks to technology. So if you want to do that, you can do. Vocabulary is a beautiful thing. Shashi Tharoor is the highest level. अभी आप यहाँ हैं तो धीरे 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 उतना भी जरूरत नहीं है कि आपको जैसे सुधा मूर्ति जी और ये Shashi, we have to take a dictionary to understand you. वो कठिन की भी जरूरत नहीं है, अच्छी रिच भाषा बोले काफी है. मूविंग अहेड, एक एक्सरसाइज आपके लिए आई है, बताएंगे आप कहाँ कहाँ यूज करते हैं कम्युनिकेशन. आई होप यू आर एबल टू सी क्विक गिव आंसर्स वेयर यू यूज ओरल कम्युनिकेशन. फॉर्मल, द वर्ड इज फॉर्मल. अगर आप देख पा रहे हैं मेरी स्क्रीन में तो बताइए, आप बोले मैं लिखूंगी. आई विल टाइप आंसर्स ऑन योर बिहाफ. In interview. अनम्यूट एंड स्टार्ट से. हाँ जी. In interview. Very good. In interview, very good answer. While presenting, while presentation. All of you take one chance, okay? I'm not reading your names. Presentation, very good. और आगे आइए जल्दी. And classroom. Classroom communication, beautiful. बहुत बढ़िया. I'm teaching. हाँ जी, louder. I'm teaching. Ma'am, group discussion. GD, yes, very good. Then, Ma'am, conferences. Conferences, beautiful, very nice. Conferences, seminar. अब spelling mistake को आप माफ करें, बस जल्दी टाइप कर रही हूँ मैं. Time कम है. Next. Go ahead. While taking lectures. Letters, applications. No, that is oral. Yeah, मतलब. I'm teaching. Teaching. हाँ, हो गया ना. Classroom communication, लिखना पढ़ना दोनों हो गया. Very good. Where you use oral? कितना यूज करते हैं आप फोन में? किसके लिए करते हैं बताइए? फोन में करते हैं, many places. Do you do for shopping oral communication? Do you use? Google is. I use oral. To raise a complaint, I am talking on the phone. I use oral communication. To visit a doctor for my medical conversation, I use communication orally. Yes or no? Doctor साहब ये तकलीफ है. You are using oral communication. Tomorrow you'll go to another country. There you cannot speak Hindi, so you have to speak English. And that also he may have a translator in his language. आप जर्मनी में बैठे हैं, थोड़ी बहुत पूरी इंग्लिश समझेंगे, आप इंग्लिश में बोलेंगे, ट्रांसलेटर ऑन किया जाएगा, जर्मन में बता दिया जाएगा उनको, आपका इलाज हो जाएगा. Yes, what next? That's all. अभी तो डब्बे खाली पड़े हैं. So okay, time is less. I am moving. Another department students told these examples. See this. Another college. I just thought एक दो मैं साथ जोड़ देती हूँ. How beautiful answers they gave. Public speeches, relatives, in office, banks, in staff meetings. Many of you are going to join office in staff meetings, right? Searching route, रास्ते पूछते हैं ना आप. Okay, question and answers. So huge way. ये formal है.
रिलेटिव से जब पहली बार मिलेंगे तो फॉर्मली बात करते हैं ना, अपने फैमिली नहीं लिखा है, क्यों? क्योंकि फॉर्मली से इनफॉर्मल बात करते हैं। आई एम डूइंग सेमी फॉर्मल। अगर मैं इफ आई यूज सो मच ऑफ फॉर्मल यू विल नॉट लर्न, मैं हाई फाई बोल के चली जाऊंगी। दैट्स नॉट माई उद्देश्य। My purpose is, can I make you learn? That's what I'm sitting for, not for my English. Okay, I use only English in many classes, but I'm using your Matra Bhasha so that you understand more. Okay, that is the purpose. That is the purpose. Okay, that happens. When I was in one class with Tamil, they did not know English at all. It was very difficult. We could not communicate. So I had to change the trainer. I helped, and NPTEL was very kind to understand that they changed the trainer. Because whatever I'm telling, I don't know Tamil, they don't know English. So you see, we could not communicate. So that is the thing. Okay. So quickly हम बढ़ते हैं why non-verbal. क्योंकि जब भी हम बात करते हैं तो आंखें बोलती हैं ना, चेहरा बोलता है, बॉडी लैंग्वेज होती है. So that is the power. Verbal सिर्फ 35% important है, non-verbal ज़्यादा important है. That's why I asked you a question minutes before. What is non-verbal? Is it important? Many of you wrote. So now clap for all the answers. जिन्होंने बोला verbal is important. Yes. अभी मैं क्या कर रही हूँ? Non-verbal. I'm appreciating you. I'm showing with this mark as a mark of appreciation, and the smile on my face is telling remaining thing. And I'm clapping. Though अभी मैं oral भी बोल रही हूँ, आपको just convert करके बोल रही हूँ. So expression, tonacity of the voice. Tonacity इतनी beautiful चीज है, मतलब ही change हो जाएगा. I'll give an example. In a very simple sentence, come here. Come here. आप समझ रहे हैं? छोटा सा सेंटेंस है. What is the sentence? इधर आइए. The teacher is saying to the student, come here. क्या है? 2 शब्द का सेंटेंस है. HERE, फिर एक लगा फुल स्टॉप. सेंटेंस के हमेशा अंदर एंड में फुल स्टॉप लगता है, फ्रेजेस में नहीं लगता है. ओके, ब्यूटीफुल स्काई, आसमान सुंदर है, इज अ फ्रेज. इट इज ब्यूटीफुल स्काई टुडे, इट इज अ सेंटेंस. तो दोनों में अंतर है ना? सो एनीवे, इंग्लिश की क्लास नहीं है ये, ग्रामर की. बट if I tell come here, because मैंने affirmative में बोला, मैं बोल रही हूँ इधर आ जाइए आप. Come here, come here, come here. Are you seeing the difference? The word is same. पहले बार, सेकंड में थोड़ा गुस्सा आ गया, थर्ड में तो बहुत ही गुस्सा किया मैंने, चौथे में ऑपोजिट, एकदम डर के मैंने बोला come here, और पांचवें में come here. Come here. See, I'm making fun of you. Come here. Mocking जिसको बोलते हैं, mock. So the way we tell is tonacity, बहुत important है. हम कितना मूव कर सकते हैं. इंटरव्यू में आप ऐसे बैठ के बात करें, सीधे के स्टिल एकदम टाइट कंधे. एक है, हाँ सर मैंने ये किया है, दिस इज द इंटर्नशिप आई डिड, दैट प्रोजेक्ट आई वाज ट्राइंग टू डू. थोड़ा हाथ मूवमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट. अपीयरेंस, कोई ये नहीं बोल रहा कि आप बहुत महंगा मेकअप यूज करें. अपीयरेंस, सिंपल कॉटन शर्ट, एक स्माइल ऑन द फेस, क्लीन हेयर डज एवरीथिंग, रादर देन गहने या कुछ और. ओके, आई कांटेक्ट की बात हो चुकी है. गेस्चर, अगेन आई एम सेइंग, व्हाट यू शो बाय फेस इज गेस्चर, व्हाट यू शो बाय द रिमेनिंग बॉडी इज पोस्चर. हाथ में ऐसे रखिए, कैन यू सी माय पोस्चर? ये देखिए, ये देखिए, इट इज सच अ नेगेटिव पोस्चर आई एम मेकिंग राइट नाउ. सो दैट इज नॉट टू बी डन. एंड यू नो व्हेन यू आर एचओडी, समबडी डज, आपको पता है, कहीं मिनिस्टर के यहाँ गए और वो पान चल रहा है, ये चल रहा है, ये च्युइंगम, पान, तंबाकू, ऑल दोस थिंग्स. एंड व्हाट विल यू से? हे भगवान, क्या मैं कैसे बात करूं यहाँ पे? हम अपने आप ही कॉन्फिडेंस लूज करने लगते हैं, इतना नेगेटिव हो जाता है बॉडी लैंग्वेज. सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. कहीं कहीं पे तो बोला गया है कि शब्द काफी कम इंपॉर्टेंट है, दैट्स व्हाई यूज सिंपल वर्ड्स, बट हाउ यू यूज एंड हाउ इज योर बॉडी लैंग्वेज विल डू रिमेनिंग. सो कितने पसीने छूट रहे हैं, इंटरव्यू हो रहा है, कभी कैमरे में ज्यादा बात नहीं करी है, इंटरव्यू के दिन ये हो रहा है. सो वी नेवर से कम ऑन टाइम इन इंटरव्यू. व्हाट इज द वर्ड फॉर इंटरव्यू? कम बिफोर टाइम. नॉट आज की तरह 15 मिनट हो गए, 20 मिनट हो गए, हम आए जा रहे हैं जब मन चाहे. सी, दिस इज ओके इन सिनेमा हॉल. आपने टिकट खरीदा है, आपका मन, उसके तो पैसे बनने थे, बन गए ना. आप देखें ना देखें, नॉट हिज प्रॉब्लम. थिएटर वाले का काम तो हो गया. द मोमेंट यू बुक शो, द जॉब इज डन. चाहे बुक माई शो में, चाहे कहीं पर भी, हिज जॉब इज डन. उसका बिजनेस हो गया. चाहे आप फेंके टिकट को, चाहे पूरा वसूल करें, इट्स योर. उसको नहीं चाहिए. सो दैट इज द ब्यूटी. So try to understand all these aspects in communication. Because non-verbal में एक और बात आती है, टाइम. तो लोग बहुत होते हैं ना इंटेग्रिटी, जो लेट हो ही नहीं सकते. कुछ लोग होते हैं जो टाइम पे नहीं आ पाते, है ना. तो वी हैव टू सी वेयर वी स्टैंड.
तो इसको आप आगे बढ़ते हैं। नॉन वर्बल में क्या होता है ना कि वी एक्सप्रेस मेनी वेज, और ये दुनिया भर में एक सेम है, सबको दर्द एक ही जैसे होता है, सब हंसते भी एक ही है, इसमें भाषा नहीं आती। दैट्स व्हाई नॉन वर्बल डज। नाउ वन ऑफ यू ब्यूटीफुल क्वेश्चन यू आस्क्ड, कैन यू यूज इमोजी? या आगे क्वेश्चन। Today, if you're talking of digital communication, it's smartness to use emoji, but not with the first time if you're communicating. Avoid emoji. आपको पता नहीं है कैसे हैं वो, ये कैसी हैं वो, don't use. But once you know, you can. With Anita ma'am, I'm sure she will not say no. Tomorrow you communicate with me on LinkedIn, I will not say no to emoji. But yes, the right emoji. अगर आप suppose for example this, I'm not very comfortable with this emoji with students, right? I'm not, see, this is fine. You're celebrating your birthday, perfectly fine. I don't expect this emoji, for example, or neither I'm cracking joke with students that I'm expecting this emoji. Beautiful emojis, neither ye winking wala to bilkul hi na, for example. So yes, we may share this emoji. We may share, ma'am, I'm scared. This is also possible. And you are too much studying. I can understand you are into reading, something like that. So these emojis do help a lot, but be with care and caution. And as we move ahead towards the end, I want to draw your attention. Communication. This is not that noise. One is noise. जैसे अभी, for example, in my neighborhood we have a lot of pets. तो कुछ कुत्तों की आवाज आ रही है. That is a physical noise. So because of that, you may get disturbed. So उसकी जिम्मेदारी actually मेरी है. Right? I try to close my door when I'm in an online class. So noise, ये physical. जो पहली बात. Outside, पे पे हो रहा है. सीटियां बज रही हैं, हॉर्न बज रहा है. This is one noise. एक और noise है जो मैं बार बार आपकी मैम को भी बोल रही हूँ. 16 students in the class, 11 answering. वो 5 बच्चे कहाँ हैं? वो इस noise में है, psychological noise. Inattentive है, कुछ और कर रहे हैं, meeting में हैं. One of the student told me एक और कहीं कोई और क्लास में कि when I caught him, he told, yeah ma'am, I had gone to take sabzi. My mother wanted to buy vegetables. Google Meet on है, he's logged in. Attendance अगर कोई बात करेगा, सिर्फ that's why I don't do with attention in the participants. वो तो 90 मिनट में आप सो के भी आ सकते हैं क्लास के साथ. And the third is written. जब हम अपनी writing नहीं समझ पाते, we teachers often face it. Even doctors भी है ना, as patients we face. समझ में नहीं आता, हम कहते हैं chemist को ही समझ में आता. और आज एक और noise जुड़ चुकी है. Can anybody tell? There is one more noise today. Anybody will guess what is that noise? Try करिए. Physical, psychological, written. एक और noise है. अभी मान लीजिए कुछ हो जाए, internet चला जाए. What is that noise? Tech related noise. Digital. Are you with me? आप समझ रहे हैं मैं जो बोल रही हूँ? Yes, ma'am. Very good. So digital noise. Yes, ma'am. है ना? आपकी ये कॉल आया, फोन से अटेंड कर रहे हैं, out of the Google Meet. Digital noise. Some students present from phone. When we ask them come and share the screen, suddenly friends का WhatsApp message आ रहा है. कभी कभी तो कुछ गंदा भी आ जाता है. Absolutely digital noise. Internet था, connectivity थी, wrong message आ गया, right time. And that also shows our personality now. Who will send this dirty message? Who knows I like dirty message? It has happened with me. I just told to that gentleman from Nepal that I am not of this taste. Sorry, the lady. I am not of this such cheap jokes I don't do. So next time उसने भेजना बंद कर दिया. कौन सी चीज बिकती है जिसका ग्राहक होता है? So that's your choice which messages come to you. Never blame others. Ma'am, he sent me. So just note it. And this all is a part of your personality. So whenever any noise comes, we have a break. घर में भी ये होता है. मम्मी पापा ने कुछ बोला, नहीं सुना, यहाँ से सुना. That's why we hear from an ear, but we listen from with ear and brain. So बोलते हैं, hey, don't worry. This ma'am को सुनो, निकाल दो. This sir का सुनो, निकाल दो. That is a poor communication. That is a communication in failing. So that's why I was asking, how am I doing? I wanted to know, because now I know with this feedback, I'm trying my best. Some of you are enjoying attending, some of you are some other work, so you are leaving the meeting. So I or NPTEL cannot be blamed. It's our duty to know. That's why a teacher should ask during the class, not end of the class. Hey, how I was? अरे आप मुझे टाइम देते सुधरने का, मैं बेटर करके कर सकती हूँ, है ना? So that is why. So this noise. पहले होता था ना, पुराने फोनों में बड़ी आवाज आ जाती थी, किर किर. Today we have a very high technology. Now we are getting 5G. तो ये तो आएगा ही नहीं noise. But पहले होता था. You ask your parents. We have used such phones. घुमाते भी थे और किर किर आती थी आवाज.
That noise started from there. तो communication नहीं हो पाएगा, कोई भी noise हो. और very important for your interviews and all, GD, तो कोशिश करिएगा नॉन वर्बल को उभारे, वो कॉन्फिडेंस से ही आएगा. आई कांटेक्ट बनाए रखें, जब आप बात कर रहे हैं क्वेश्चन समझ में आया तो थोड़ा सर हिलाएं, स्माइल रखें, थोड़ा आगे आके पूछे, तो ये सब पीछे रह के नहीं बताएं, थोड़ा इंटरेस्ट दिखाएं और सही टोन यूज करें, सही टोन. It will be great work. So this is mainly about oral communication. And now, before I end, I will draw your attention on a beautiful website, The Balance. Especially to final year, I share. Not that I'm promoting this website, no, but they have very good inputs on communication and other things. This slide I have taken from there. So what all we speak, what I spoke now, just match. कितना important है ये सारी बातें top interview skill के रूप में. See the word, it is skill. ये लिखित नहीं है कि what is interview. Nobody is going to ask you. You have to perform now. Like in Bangalore, we already have started placements. Here it has started. I'm sure it is starting in your Greater Noida also. In such a IT hub you are staying. So first is prepare. Again, यहाँ पे भी. Mental preparation, oral communication, prepare for interview. Prepare doesn't mean एक अच्छी नई शर्ट खरीद के लिए आई. No, not that preparation. मुझे बोलना क्या है? How will I introduce myself? Be punctual. जो आज मैं बहुत emphasize कर रही थी. Think before speaking. Oral communication will be better once you know what you are speaking. Be clear and calm. Ghabraye na. Okay, be slow. Nobody wants. They will give you time. And even if you're from Hindi belt, they will give you time. People from Tamil Nadu and Andhra and Karnataka also don't speak good English, many of the students. Don't worry. Don't think in Bangalore everybody speaks good English. Not at all. So we tell, relax. Like that. So you can, generally you will get good interviews. Don't worry. Be confident. और इतना शान ना दिखाएं. Don't be arrogant. Even if you are come in BMW, वो आपके पापा या मम्मी की गाड़ी है, अभी आपकी नहीं है. So be confident, but don't be arrogant. And listen well. और जाते जाते, जैसे अभी आपने thank, some of you did thank me. जबकि वो बीच का इंटरव्यू फीडबैक था. Still in interview, always, even if आपका सिलेक्शन नहीं हुआ है, क्योंकि हर इंटरव्यू आपको सिखाएगा कुछ बेटर होगा. So interviews में हम ये नहीं बोलते रिजेक्ट हुए. The right language is I was not selected. क्योंकि आप अपना हमेशा बोलना आई एम मेड फॉर अनदर जॉब. सो देयर आर स्टूडेंट्स हु फील लाइक दिस, तो शिट, आई एम सो बैड, दिस वी टेल नेगेटिव टू अस. नो, ये ना बोले, अपने आप को ऊंचा रखे. सो जब भी चांस मिले, लाइक टुडे यू गॉट अ चांस टू से, स्पीक, लर्न. ग्रेटिट्यूड टू एनपीटीएल एंड द टीचर. थैंक यू सो मच. I have gratitude to NPTEL because I like connecting with new students beyond my own students. So I feel gratitude. And that's why whenever I write on LinkedIn, I do write good for LinkedIn, for NPTEL. So ये सारे interview skills हैं. 90% of the interview skills are all about oral communication and non-verbal. I hope you understood. So I'll just stop sharing for some time. I'll just take quick questions if you have. तो फिर आगे बढ़ेंगे. Time कम बचा है, but still we will take 5-7 minutes more. Yeah. Anybody? Would you like to ask or say? Major part हो चुका है. But I had something to say about GD and all also. But let me know. Yeah, please बताएं. Any question, any doubt, any opinion? This is the time you can share. Yes, प्रियंक सिंह, मैं आपको अभी देख रही हूँ. हरिओम शुक्ला जी, आप भी आ जाइए कैमरे पे. Aman Sharma ji, you too. Sahil, Manav, all are boys in this group, huh? No girls. Very good, Hariom. Yes, Gyan, आपके पास light की कमी है. Why are you sitting like that? Any reason to be sitting in Ma'am, while I started this meeting, at that time there was daytime. Now it's become आप बाहर slightly बैठे? late. No, I am in room and switch is there, and Okay. I don't want to go there. अच्छा. Okay, ma'am. I have one thing to share. Big sir, I also it's my problem. I can't speak big sir for the timing, and I get to know this about when I was in first year in my college, when I was giving audition for acting. Then there they catch me that I was not able to speak big sir, bada sir. So and from there it's 3 year past and I am still struggling with that pronunciation, spatial and spatial thing. That big sir, I am not able to some of the, and that's why I ask also about why pronunciation plays role
important role हाँ, in communication हाँ. skills. Yeah, I think a ma'am wants to say something. She has raised hand. Please go ahead. Yes, ma'am. Mm, mm. Thank you so much, ma'am. Yes, ma'am. Uh, one ma'am. Yeah, yes, ma'am. Uh, I know ma'am. Don't know her name. Mm. I think you can discuss your own also because we are losing time. But Okay, ma'am. Okay, ma'am. secondly, you can please practice. जैसे अभी आप बोल रहे थे pronunciation. The word is pronunciation. Not sir, not big sir. आपका sir sure में अंतर आ रहा है. Nothing, we cannot blame you. आपके घर में भी ऐसे ही बोलते होंगे बेटा, तो आपने पिक करा है वो. बहुत कॉमन है अपने नॉर्थ बेल्ट में. Nothing to feel bad. But you cannot stay there. तो प्रैक्टिस कर करके ही आएगा. एक ही आंसर है. अपने आप को बिल्कुल अवेयर रहते हुए, अवगत करते हुए कि यस आई हैव टू से, अभी मैंने गलत बोला, तो इनिशियली क्या होगा, 10 टाइम्स यू विल से, हो सकता है 2 बार आप ठीक बोलोगे, 8 बार गलत चलेगा. धीरे धीरे करके 5-5 होगा. डोंट एक्सपेक्ट एक ही दिन में. कोई भी इंग्लिश हिंदी टीचर कैन नॉट हेल्प यू इन 1 or 2 days दैट आपको वो सर शो में चेंज कर देंगे. ज्ञान खुद से होगा आपको. ओके, यस शुभम, यू हैव रेज्ड योर हैंड, प्लीज गो अहेड. मैम जैसे कि मैम जो अभी क्वेश्चन मैम पूछा था मैंने कमेंट पे कि वोकैबुलरी के लिए अपने इम्प्रूवमेंट के लिए क्या करना चाहिए. तो मैम एक बुक आती है वर्ल्ड पावर मेड इजी, जैसा कि मतलब कॉम्पिटिटिव टीचर्स बोलते हैं, तो मैम वो कितना मतलब बेनिफिशियल होगा हमारे. वो भी काफी अच्छी बुक है. वर्ड पावर मेड इजी एक टाइम था जब इंटरनेट नहीं था तो बहुत यूज किया जा रहा था. टुडे यू हैव बहुत मेनी मोर साधन. सो आई वाज मेंशनिंग यू, न्यूज़पेपर इज अ ग्रेट टूल टू मेक इंग्लिश. पर प्रॉब्लम क्या है ना, जैसे हम जैसे अभी क्लास चल रही है, कुछ ना कुछ तो नया वर्ड सीखा ही होगा, ये सुनने में आया होगा, उसको लिखें, उसको छोड़े ना, क्योंकि हमारी एक क्षमता है सुनने की या यहाँ पर स्टोर करने की. सो वंस यू राइट यू प्रैक्टिस मोर. तो प्रॉब्लम क्या है ना, टुडे विद गैजेट इन हैंड यू आर, मेनी ऑफ यू आर नॉट प्रैक्टिसिंग राइटिंग. आपको लगता है सिर्फ आंसर लिखेंगे डायरेक्ट. तो वो एक थोड़ा सा एक बहुत बड़ी कमी चल रही है आजकल. वी आर कमिंग फ्रॉम अ टाइम वी, आई स्टिल लव, आई एम अ टीचर, आई लव विद पेन एंड पेपर, पेंसिल एंड पेपर. सो राइटिंग, लिखे ज्यादा, दैट्स वन थिंग. इट विल बी ऑफ ग्रेट हेल्प. watch the, when you watch YouTube videos, TEDx की वीडियो देखें आप, you will love them. They don't speak very high English. जोश टॉक सुने, दे आर इन हिंदी. तो जिसको हिंदी में करना है, अच्छी क्लिष्ट भाषा करनी है, वो हिंदी वो सुने. Many people speak Hindi which is of very poor quality, but वो बोलते हम हिंदी बोल रहे हैं. उनकी हिंदी भी बहुत निपुणता नहीं है हिंदी में, वो सिर्फ रोजमर्रा वाली हिंदी बोल रहे हैं. So language is beautiful when grammar and vocabulary are added. वो सजावट है लैंग्वेज की. अब दिवाली आती तो किसका घर अच्छा लगता है बिना लाइट के, वैसे ही यही वाला सजावट है. तो निगाह जाती है, अरे वाह यही लैंग्वेज है. द मोमेंट यू एड ग्रामर एंड वोकैबुलरी, वो सजावट के रूप में आ जाता है पूरा, और हमारा ध्यान आकर्षित करता है. तो कुछ ऐसे जो नॉर्मल बोल के चले जाते हैं, फिर हमें मजा इतना नहीं आ पाता. व्हाई आई नेम्ड मिस्टर बच्चन और मिस्टर मोदी, आवर करंट प्राइम मिनिस्टर, you know, and Mr. Yogi ji, you learn one or two. Whenever I watch them on YouTube, मेरी हिंदी बढ़ जाती है उनके सुनने के बाद. I love, because मैं क्यों सुनूं सिर्फ, मैं, I ask myself, why should I waste my time without learning something new? See, he's my home state chief minister, Mr. Yogi. Still, I am spending time. Let me also hear. I told you in the पिछली slide, very important, feel very important. So I'm feeling very important. I'm talking to 10 plus students of Gautam Buddha University, Institute of Technology, for example. So I am trying my best to add some time. Okay. Abhinav says, ma'am, the Hindu, we take more than an hour and it's slightly tough to remember. In Hindu paper, huh? Hindu paper बोल रहे हैं आप? The Hindu? Yes, ma'am. Yes, ma'am. The editorial part. Yeah, perfectly fine, Abhinav. So editorial is toughest in Hindu. तो editorial से ना शुरू करें, सिंपल से शुरू करें. जनरली पेज नंबर 1 में न्यूज में बहुत अच्छे वर्ड्स होते हैं और डिस्क्रिप्शन इतना नहीं होता है. तो एक होता है मेन हेडलाइन, एक सब हेडलाइन. तो आपको नए शब्द यहाँ मिलेंगे. नया, जैसे क्रिकेट का पेज है, इतना अच्छे फ्रेजेस मिलेंगे इंग्लिश के. यू नो द वे दे राइट, कोई कैसे हारा जीता, वो नॉर्मली होता है कि इंडिया लॉस्ट. क्या बढ़िया लाइन लिखी होती है.
तो हिंदू बहुत अच्छा एग्जांपल दिया अभिनव. I will clap for you. This is the highest quality paper currently available in India. Better than Times of India for English. So use it. Perfectly fine. So question is, how do new words remain in memory? By use, Abhinav. वो तो चले जाएंगे एग्जाम की तरह. आपको याद है फर्स्ट ईयर में आपने जो पढ़ा था बेसिक इंजीनियरिंग फिजिक्स या बेसिक सी आपको स्माइल दे रहे हैं क्योंकि आपने एग्जाम के लिए पढ़ा था. फॉरगेट इंग्लिश वोकैबुलरी. हम अपने सब्जेक्ट ही याद नहीं रखते हैं. क्यों? क्योंकि हम एग्जाम के लिए पढ़ते हैं. स्टडी फॉर नॉलेज. आप सब्जेक्ट नहीं भूलेंगे. सिमिलरली स्टडी फॉर वोकैबुलरी एंड टॉकिंग आप नहीं भूलेंगे. अभी आपको 4 क्लास और मिल रही हैं आज को छोड़ के. तो इतने एंजॉय करें एनपीटीएल की क्लासेस. यू विल लर्न सो मच. The last day you check yourself. Where was Abhinav? Where is Abhinav today? आपको अच्छा लगेगा. आपकी बढ़ोतरी दिखेगी. Is it okay? Okay. So quick on homework. Before I take more questions and because I still see 1 or 2 of you left. Session आपके लिए extend किया जा रहा है, but अभी भी अगर आप छोड़ के जा रहे थे, I'm sorry. So ये आपको दिखाना चाह रही थी इस homework में. Try to do this work. What is your take a homework, and the best homework is audio clip, if not video, because many of you are very camera conscious. बार-बार आपके हाथ बाल पे जा रहे हैं. तो अभी कोई बात नहीं. अभी हमें start with audio. Audio clip, introduce yourself. So quickly slide का screenshot ले लें. Generally this will help you in interview also. Generally interview में we ask for 60 to 120 seconds. कभी-कभी हमें जब बच्चे बड़ा मजा आ रहा है तो we tell okay बोलो और बताओ. So it goes 3 minutes, 180 seconds. तो आप ready रहें 100 second के हिसाब से. Introduce yourself. तो सबसे पहले greeting and thanking for opportunity. Vinny, I am such and such. Thank you so much, sir. You may not, अगर greet कर चुके नमस्ते तो फिर नमस्ते दोबारा नहीं. Thank you so much, sir. Thanks for this opportunity to introduce myself. I am such and such, coming from this place and this university. I am in the final year of this branch. And with pride, I tell that my college is, एक तो college की खूबी बता दें. That shows how much proud you are for your college. तो ये पता चलता है आप कितनी integrity है. Tell about your family, your goals, your dreams. And at the end, do add your interest. Don't tell much about hobby introduction में. Till until वो पूछे, थोड़ा बात के लिए रखें. But you will tell about your interest. That will define your. See, I had interest in communication when I was a student and a scholar in university. And today, beyond my subject, food technology, I have another career in communication. You see my own story. This is a real story. ठीक है, pandemic pushed me, but this is what is the final outcome. So I do 2-3 things. And today, because of that, I teach MBA students. I was only teaching BE. Now I teach MBA also. So this is something, कहाँ से कहाँ चले जा सकते हैं हम. It's a beautiful life. तो अपने आप को सकुचाए ना, बांध के ना रखें. And take this, इसको practice करें. इसमें कुछ और जोड़ भी सकते हैं. You can delete and add also. ये by and large एक guideline दे रही है आपको. ये fixed नहीं है. इसको YouTube में भी देखें. बहुत sessions है. Introduce yourself. जी. मैम ये शॉर्ट टर्म्स एंड लॉन्ग टर्म्स गोल में मतलब क्या बोल सकते हैं मतलब. वेरी गुड. सो शॉर्ट टर्म होता है जब आप इमीडिएट करना चाह रहे हैं इंजीनियरिंग के बाद 1-2 साल में. लॉन्ग टर्म मतलब ओवरऑल एज ए इंजीनियर व्हाट यू ड्रीम ऑफ. लॉन्ग टर्म गोल कैन बी योर एंटरप्रेन्योरशिप. लॉन्ग टर्म गोल कैन यू वांट टू बिकम अ सीईओ ऑफ अ कंपनी. उसमें कहीं लैंग्वेज की बात नहीं आती है. नेवर हेजिटेट. कभी-कभी हमें लगता है हम बहुत अच्छे इंजीनियर हैं, इंग्लिश अच्छी नहीं तो हम अच्छे इंजीनियर नहीं है. सॉरी, नॉट एट ऑल. So engineering is you will be helped. It will not be completely on English. Don't worry at all. Short term goal अभी 2 से 3-5 साल में. But some people say I want to complete my engineering. That is not the goal. वो तो आप already आ चुके हैं. You are already on the way. So finally में आके ये मत बोलना I want to complete my engineering is my short term goal. So sorry. है ना, ये गलत हो जाएगा. So I hope I could answer you, Shubham. You were asking if I'm not wrong. Could I answer you? Okay. So quickly, I hope you have noted this all. And in a formal way, any presentation should always end with thank you. So I'm thanking NPTEL and you with your ma'am that all of you who are present, you are present. And this with these fingers, I'm showing you, each of you are important. Each of you kuch bole, kare, acha kare. And if you want to get in touch, you can connect with me on LinkedIn. We invite students. And I'm new to Instagram. I'm a learner, but I don't follow anybody in Bollywood and all that. So I have a different kind of taste because to me life is beautiful. So I try to learn. So आपको मजा नहीं आएगा हो सकता मेरे पेज पे तो LinkedIn पे आए. Okay, where I do meet many, including some vice chancellors. So and I'm reachable at email ID also. So do write if at all you have doubt. So with this we are thanking. And one last question. What are the? I didn't share the screen. I'm so sorry. I thought I was sharing. Oh yeah, sorry. This is the screen which I was sharing on. Thank you. And those fingers. These are my fingers for my children. Right now, you are my students.
ओके, ये 90 मिनट आप मेरे साथ जुड़े थे. सो हर एक उंगली स्माइल कर रही है. दैट इज माई टारगेट. एवरी चाइल्ड शुड स्माइल. सो अभी आप स्माइल करें और अपने आप को कैमरे में देखें. वाओ, द पावर ऑफ स्माइल. सो आई एम रीचेबल एट दिस ID or LinkedIn. LinkedIn, very simple, just my name. Okay, so let's see, let's talk and communicate. And before you leave, one question: what are the new words you learned today? Can you quickly put on the chat? I had a tool, but time nahi hai, to main aapko wo tool abhi nahi de pa rahi hu. But if you're ready to stay, I can spend 5 more minutes. Are you ready to stay? Can we have 5 more minutes? Is it yes or no? Quickly bataएं. ये या ये? No? फ्यू हैंड्स. सबके हाथ नहीं आए. तो बाकी लोग क्या सोच रहे हैं? देवेंद्र, शुभम? नहीं, जबरदस्ती की बात थोड़ी है. अच्छा, प्रियंक ने कहा थोड़ा सा रुक के मैं भी हाँ बोल ही दूं, क्या करूं.